Been playing cricket for 2 decades, around 20 years. And he's on a hat-trick. Oh my goodness! And got through the wicket-keeper and the slips. I was telling you, maybe some close in more fielders. And I believe Mehra lefty is not happy with Shiraz when he was asking him that we need to enter some more fielder in that slip situation. And eventually that moment of the hat-trick is gone. And 2 runs straight away to Nissan Thakur. अगर विकेट कीपर की क्लोज ऑफ फील्डर जो देखिए अभी जो पोजीशन है उस जो वहां पे फील्डर को प्लेस किया गया है, मुझे लगता है कैच आउट हो सकते थे वहां पे. Indeed, had been there a slips, I believe, very close. This could have been a hat-trick. Eventually not written in the fate of Vani. And Nissan Thakur, a very experienced cricketer, who is out here, is on 3 of 2. 10.4. It's 92 for 4. Next ball pulls straight to the mid-wicket, rather long on. And easy pickings to Sohail Paul. And now Sohail Paul, he just finds himself in a situation where he has to surely go some big runs under his belt. और बिल्कुल आज वो पारी खेलनी होगी और आज जरूरत है आपकी टीम को. आज जो बल्लेबाजी रही है वो कोलैप्स हुआ है, उसके बाद जब विकेट से गिरे उसके बाद विकेट गिरते गए. अब यहाँ से एक स्टेबिलिटी देनी है अपनी टीम को, उसके लिए आपको एक पार्टनरशिप की जरूरत है. It's a rebuilding process. It's a construction. It's a partnership needed. And I believe the spinners are once again dominant in this very finals. And we should give credit to Shiraz Vani, the way he just brought one more spinner. Even though Kashyap hasn't got a wicket, but on the other side has bowled well. He has bowled economical. And on the other side, Shiraz Vani has surely caught into the confidence by getting those 3 quick wickets, back-to-back wickets, and putting Pulwama on the driver's seat. बिल्कुल. और अगर हम सोहेल पाल की बात करें, 2-3 बार इनको स्प्रे छिड़काया गया था, मे भी कुछ इंजरी महसूस कर रहे हैं, बैक इंजरी, और उसका फायदा उठा सकते. लेकिन अभी तक तो जो शॉट्स लगा रहे हैं और रनिंग द विकेट तो काफी अच्छे हैं. मुझे लगता है वो इशू नजर नहीं आ रहा है, लेकिन स्प्रे 2-3 बार इनको किया गया था. And he might be struggling. He's not looking completely fit. He has been sprayed around twice. Kashyap once again just turns the ball down to the Skellig region. There is Abid, the protection. Only a single. And what should be the idea, what should be the role, and what should be the strategy to try and contain that kind of runs that are going and not give the freedom to the batters of MLA Gymkhana to just use their long handle. Or else we are seeing very strong comeback by Prince 11 Pulwama. कमबैक काफी शानदार रहा है और इस बार काशिफ क्या रहा, आउट होंगे, लेकिन नो मैच लाइन पे गेंद गिरेगी और तेजी के साथ 1 रन चुराया. अब सिंगल से काम चला रहे हैं अभी एमएलए जिमखाना की बल्लेबाजी. Well, that should be the execution of the plans, knowing that their top order 4 batsmen have gone back to the pavilion. And if they manage to play till 15 overs around single ball, single runner ball I should say, without losing a wicket, and then they can take the long handle in the remaining 5 overs. Next ball down the track, and just happens to play down to the backward of Skellig only for a single. They just try to make clear this intention, just reach 120, 125 without losing any more wicket, and having that 5 overs and 6 wickets in hand, I believe they can take the chances. Next ball, Shiraz Vani was in a bit of an awkward position, but still manages to stop the ball. And I believe a good toss to win, a good strategy, a good spinner now introduced, and that's why we see the result is in favor of Prince 11 Pulwama. Next one, beautifully slogged. Adil 50 just trying to stop him, not reaching the ball. It goes over the line, 4 runs. और शॉट देखिए यहाँ पे, ये देख अक्रॉस द लाइन एक शॉट खेला था और वहां पे आदिल 50 कोशिश कर रहे थे गेंद को रोकने की, लेकिन तेजी से गेंद ट्रेवल कर रही थी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. 4 रन के लिए 100 का आंकड़ा छुआ है एमएलए जिमखाना की टीम ने. Spectators out there just enjoying this beautiful game of finals, grand finals of J&K Qualifiers League, and they're just loving it. They're on the screens at you. This is Kani Memorial Stadium, Rajouri Kadal, downtown Srinagar. And this one is up in there. Javed Malik, will he reach? Oh! Chest shot. And eventually Nissan Thakur has ample time to go for a double. Nissan Thakur is playing good cricket. He's just believing in going run after a ball.
Just 10 of 7. Kaushik completes his third. 9 of the over. 12 done. It's 102 for 4. Glenn, if we talk about the run rate, it's just 8.5, and they're not just letting the run rate go down that 8, and still if they play with this kind of run rate in control, 170 is on the boards. और बिल्कुल अब यहाँ से शिराज वानी फिर से गेंदबाजी करने के लिए स्वीप खेला है, क्या वॉल्यूशन मिला? Oh my goodness, can you believe it? Catch is dropped from Abid Mir. That was a very, very tough catch. He did cover a huge and long distance, got to the position, and ultimately Nissan rather Sohail Paul is dropped. That might be very expensive. और बिल्कुल वहां से कैच आसान था, ज्यादा मुश्किल कैच था नहीं. अगर कैच पकड़ते जो रन्स का फ्लो कम हो जाता और विकेट सोहेल पॉल की विकेट आप लेते. All the work was done, all the hard work was done by Abid, and Shiraz Wani just looking once again on Abid Mir, boy, whatever done. Full toss once again. Naran Pandit underneath the catch. He's not going to drop one. Nissan Thakur departs. What a great bowling by Shiraz Wani. On the next ball, he caught the wicket even though of Nissan Thakur, but still he will take it. Some relief on Abid Mir's face because this was going to be very demolishing and brutal for the man. Nissan Thakur got a full toss and an easy catch for Mera lefty. और वहां पे ट्रैप में फंसा है शिराज वानी ने. वो पे आप देख सकते हैं इस गेंद में पेस के साथ गेंद की थी, तेज गेंद की थी और ट्रैप में फंसा लिया वहां पे निसार को. इससे पहले फ्लाइट दे रहे थे और इस बार ट्रैप में फंसा लिया और एक और विकेट का पतन होता हुआ निसार को जाना पड़ेगा. और शिराज वानी, आप इनकी इकोनॉमी देखिए फाइनल्स में. And here I was gonna go. Here is Harry screens Mr. Shiraz Wani. Just look at the bowling figures. 3.2 overs, just 22 runs, and he has taken 4 wickets. And he can be having a 5-wicket haul. And I believe he is such a great all-rounder. And he's taking it on just single-handedly and is getting wickets. No other bowler from the other side is having wickets. But my boy, this man is a gem. He is indeed a gem from Pulwama. और जब परफॉर्म करना था तब परफॉर्म किया और भी बड़े स्टेज पे. और बड़ा मुकाबला था या आज किस्मत चमकी है. और आज जो परफॉर्म किया है शिराज वानी ने, आज ये जो सितारा था वो चमकाया है. और ये जो सितारा है ये टिमटिमाता नजर आ रहा है. गनी मेमोरियल स्टेडियम में परफॉर्म कर रहे हैं वन एंड ओनली पुलवामा की शान शिराज वानी. 4 विकेट ले चुके हैं. 22 रन साहब जुनैद आए. जुनैद को आज प्लेइंग 11 में जगह मिली है और कैप्टन ने कहा था कि आज हमने एक ऑलराउंडर को ऐड किया है. तो जुनैद आज कैसे परफॉर्म करेंगे? अब जुनैद पे निगाह रहेगी एमएलए जिमखाना की. और शिराज वानी के पास अभी 4 गेंद है. इस बार खेला है वहां पे कॉर्नर की तरफ. पीछे प्रोडक्शन मौजूद है और तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया गया. दूसरे की मांग रहेगी. जी नहीं, 1 ही रन मिलेगा वहां पे. और शिराज वानी की अभी भी 3 गेंदें. कोशिश होनी चाहिए इनको विकेट ना दे 3 गेंद में. Absolutely, but on the side of Shiraz Wani, he will be loving to take a 5. He is such a legend. He is such an icon. And here he bowls. Flighted ball up in there. Just, oh my goodness! What an effort from Adil 50. That was travelling at speed. Almost he got to the catch. And the ball just goes over the fence for 4. Sohail Paul, just down the track he goes, makes clear to the pitch, and he just hits it over mid wicket for 4 runs.
going deep. He just kills it a thump. He just smashes it over backward square leg region. That is a biggie. That is a huge six from Sohail Paul. And now Shirazwani is about to having a roll. He is being given some punishing strokes. और जो इनका कैच ड्रॉप हुआ था अब उसकी भरपाई कर रहे हैं सोहेल पॉल. अब जिले पे नमक छिड़क रहे हैं. Absolutely, he is just rubbing the salt on the wounds. Just watch it, exposing the stumps big way, and he just pulls it beautifully for his 6 runs. And his catch that might be hurting, and that can hurt badly if we talk about Prince 11 Pulwama. 10 runs of the 2 balls so far. If we talk about 4 and 5 balls, and Shirazwani was going great. Now these 10 runs might give some kind of an economy. Last ball of his quarter. Down the track. This is Sohail Paul. And that has gone once again for 6 runs. Wideish mid-wicket region. And Shirazwani just so disappointed with the runs that have gone over the last 3 balls. Let's give credit to Sohail Paul. He's not gonna miss this opportunity. Knows his catch has been dropped. And he will make them pay for the drop catch. और कदमों का शानदार इस्तेमाल कर रहे हैं. और जो कैच ड्रॉप होता है उसके बाद जो इन्होंने इंटेंट दिखाया है, जो बल्लेबाजी की है, कोशिश होनी चाहिए इनको जल्दी से जल्दी आउट करने की. अगर ये मैदान पे टिके रहे तो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य आपको फिर चेस करना होगा. और वही काम कर रहे हैं अभी सोहेल पॉल. और देखते देखते 31 पे पहुंच गए. 19 गेंदों का अभी तक सामना किया है उन्होंने. अब यहां से बचे 7 ओवर. करंट रन रेट भी अब 9 के ऊपर पहुंच गई है जो पहले 8.5 के आसपास थी. This is Sohail Paul. 16 runs off the last 3 balls of Shirazwani. And in your replay, you are having those last 3 wickets. This is Tajamal Baba. Beautifully. I believe this is Manzoor King. Beautifully catch out there by Sohail Khan. Next one, Nisar Thakur. This was Mehran Pandit. Easy catching. These are the wickets for you. And Shirazwani, who completed his quota 4 overs, 39 for 4. He could have got some more better bowling figures, but eventually 2 sixes and a boundary on the last 3 balls by Sohail Paul. 16 runs. And now I believe ML Gymkhana back in the game. 120 for 5, still 7 overs to bowl. And the run rate is going over 9 now. और 7 ओवर्स यहाँ से बचे हैं. कोशिश होनी चाहिए 70-80 के आसपास रन बनाने की और विकेट सेव करके रखे. अब जुनैद को यहाँ से मुझे लगता है सोहेल पाल का साथ देना चाहिए. आज जुनैद को जगह मिली है प्लेइंग 11 में. और तजमुल बाबा ने भी कहा था कि हमने एक ऑलराउंडर को ऐड किया है, तो मुझे लगता है आज उनको वैसी पारी खेलनी होगी. Absolutely, he has been brought in the team as an all-rounder, and his job will be to just go for some runs and give the more of the strike to Sohail Paul. 31 of 19. Strike rate of around 170. Scoops it beautifully and scoops it for 4 runs. That's a panel scoop, I tell you. Just using that length, using that ball and finding that long leg, 4 runs. और काफी शानदार स्कूप शॉट खेला. इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत थी और जुनैद ने वो कमाल का शॉट खेला. 124, 5 विकेट के नुकसान पे एमएल जिमखाना. I believe that was a dead ball. Umpire Sonu just mentioning the same. Umpire Sonu standing on the square leg. He just declared it as a dead ball. .120 for 5. Bilal Ghani. Any balls? Once again, he's bowled him. He just tried to have the repeat of that scoop. He missed, and I'm gonna hit you. Once again, Supina comes into the role. He comes into the party. And Prince 11 of Pulwama finds number 6 now. It's 120 for 6. और जुनैद को जो आज इंट्रोड्यूस किया गया था प्लेइंग 11 में, आज कुछ करामत साबित नहीं हुए.
और मुझे लगता है स्ट्रेट बैट से आपको ज्यादा शॉट्स खेलने चाहिए। ये मुझे लगता है सही डिसीजन था नहीं। सुपनर के खिलाफ आप ऐसे शॉट्स ज्यादा खेल नहीं Well, सकते। that's not a great improvisation against the likes of Sipina, especially who bowls a bit quicker. He just missed the line completely and bang on the target. Friends 11 Pulwama getting back in the game once again. Here you see at your screens, and out walks to the centre Mr. Star Abadgam. He is Mohsin, and I would love to see some strokes, and he is known for just playing standing tall, and is also a great timer of the ball. Such is the talent he possesses. Let's see whether he comes strong today along with Sohail Paul or not. करंट रेट तो काफी अच्छी है, लेकिन जो विकेट्स का कॉलम है वो काफी ज्यादा है। विकेट्स गिरते रहे, ये प्रॉब्लम आपको बाद में क्रिएट कर सकता है। And I believe, just look at the remaining overs, 6.4 overs to remaining, 40 of the balls, and you have got only 4 wickets in hand. I believe MLA Gymkhana, to some extent, it does look to me, they look in a hurry. There is no need of haste, no need to go for some hasty and risky strokes. Try to play the full count of 20 overs. In between, you will definitely have some loose balls. And you are just trying to go for improvisation, just experimenting out there in the middle, and in between you are just losing the wickets, that too in a number. बिल्कुल काफी जल्दी में नजर आ रहा है, और यहाँ से आपको करना होगा कि पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। एक अच्छी खबर एमएलए जिमखाना के लिए कि ये है कि सोहेल पाल अभी भी खड़े हुए हैं। And now he has one more good partner, young man, Mr. Mohsin Manzoor. He is such a lovely timer of the ball. And in that quarter final we did see some great innings of this man of around 40. Those inside out strokes, he does play good, and MLA Gymkhana would love to get some runs from this man. Next ball just driven and straight to Shirazwani. Such a great fielder, not a good backing, and runs, no proper backing, overthrew, and they go through for a single. 1-2-2 for 6. MLA Gymkhana just losing the toss and asked to the bat first in this grand finals of J&K qualifiers. Like, this is what I was telling you, for where this man gets the power. An extension of arm is just so grand from this Mohsin Manzoor. My board, I just fall in love with this man. The way he's generating power and the way he's generating those distance as well. What a shot from Mohsin. Stand and deliver. और खड़े खड़े शॉट खेले और पावर जनरेट करते हैं अपने शॉट्स में। क्या कमाल का शॉट था ये। अब क्या ऐसे ही शॉट्स खेलेंगे, ये देखिए मोहसिन आपके स्क्रीन पे है, लेकिन क्या शॉट था ये, कमाल का शॉट था ये। अभी 6 ओवर्स बचे हैं, यहाँ से करंट रन 9.14 की कोशिश होनी चाहिए 60-70 के आसपास रन बनाने की। 6 ओवर्स बचे हैं। एमएलए जिमखाना 128, 6 विकेट के नुकसान पे। आज उनको दावत दी गई थी कि आप बल्लेबाजी करने के लिए आए, कि टॉस जीता था फ्रेंड्स 11 पुलवामा के कैप्टन ने। क्या बॉलिंग में कुछ चेंज किया जाएगा? मुझे लगता है कि आदिल 50 के हाथ में शायद गेंद थमाएंगे शिराजवानी। 6 ओवर्स बचे, 128, 6 विकेट के नुकसान पे। कुछ मशवरा भी आता हुआ, कुछ मैसेज भी डगआउट से आई है अभी एमएलए जिमखाना के लिए कि किस स्ट्रेटजी के साथ आपको ये 6 ओवर्स यहां से खेलने होंगे। 128, 6 विकेट के नुकसान पे, और बिलाल ने अच्छी गेंदबाजी की। 2 ओवर्स में 21 रन खर्चे और 1 विकेट उन्होंने अभी हासिल किया है। And last 6 overs will be very crucial for both the sides. And just look at that run rate once again, going over 9. They are just having that run rate in control. And if you just go with 9 runs over, you are surely going to cross 180. बिल्कुल। और लीजिए अब आदिल 50 को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया। पिछले मैच में वैसी गेंदबाजी की नहीं थी उन्होंने, लेकिन आज मौका है इनके पास अच्छी गेंदबाजी करने का। Absolutely, he has got a great platform, a very good position his team is going through. 6 wickets already back to the hot for MLA Gymkhana, and Adil 50 now given the first time the ball in his hands to come. Let's see how he is going to go with his approach. No slips, deep third man, a backward point, a deep cover point, a short cover, a long off. Rather, I will take him as deep mid on.
Well, got a long on, a deep mid wicket, a short fine leg, and a short mid wicket inside the circle as well. This is Kashif Kamar for you and your screens. 128 for 6. Friends 11 Pulwama just wraps him on the pad, but I believe that was going down the leg stump. And Sohail Paul will just have a leg by. And Sakleen just talking about this Mohsin Manzoor. He's turning out to be a real upcoming star, a star in making if we talk about District Budgam. You saw that 6, that was phenomenal, fabulous, stupendous and a fantabulous shot. बिल्कुल भड़गाम की शान है आज अच्छी पारी खेली। Once again, this is what I was telling you, my goodness, that has gone great! And that has gone over coverage and put another 6 from this Mohsin Manzoor. He's just making it so easy. He is making it so confident, and he's just making it go over the line for 6 runs. I think this is shot of the day. And I believe this is the shot of the tournament. What a shot from this man. Wow, you are beauty, you are gem, Mr. Mohsin. And if you can have the replay of that shot, just watch him. He stands tall and he stands so still and just making the ball come closer and hits in the direction the way he just wants it. This man is a real gem. He's awesome. He is awe-inspiring. Adil 50 once again. Once again just finds the ball close and plays it on the onside for a single. I just love this man. What a clean hitter of the ball. और जो शॉट था वो काफी शानदार था। उस जोर से मारने की कोशिश नहीं हुई, टाइमिंग पे ध्यान दिया और डिस्टेंस भी काफी तेजी से ट्रैवल किया इस गेंद ने। क्या शॉट था, कमाल का शॉट, लाजवाब शॉट कहूंगा मैं इस शॉट को। That is indeed a very लाजवाब shot. Next ball down the leg stump. He wanted to flick it. The ball takes the leading edge and down to the left of Mir Faizan at third man. It goes over the line, 4 runs. Adil 50 has gone for a dozen in his very first one. 15 gone with the run rate of 9.3. It's 140 for 6 ML Gymkhana. We are live from Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. Grand finals of J&K Qualifiers League, organized by AN News Channel. And the venue is Ghani Memorial Stadium, Rajouri Kadal, downtown Srinagar. 2 finalists. Maybe you might have tuned in late to AN News platform. It's ML Gymkhana in Friends 11 Pulwama. Toss won by Captain Pulwama, Mr. Shirazwani, and he opted to bowl first. So far a good decision, but now it's turning out to be some challenging because we believe we have got 2 great batters out here in the middle. और अभी अच्छा कंटेस्ट रहेगा, यंग वर्सेस यंग, मोहसिन वर्सेस फैजान. Indeed. That's a good ball. Mir Faizani beauty. He's such a great bowler and bowling at pace, at speed, at accuracy, at good length, at good line, having such control, having those slow ones, having that Yorker as a weapon as well, and is really a star in making from District Pulwama, South Kashmir. He is gonna bowl to Mohsin. 14 of 6 in goes Mir Faizan. That's a pacey one again. Just leaving his crease for a moment and making sure he just hits it through extra cover and not written. We are live from Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, downtown Srinagar. And if any of the spectators want to come to the ground, this is Ghani Memorial Stadium, Rajouri Kadal, downtown Srinagar.
I've got a huge number of crowd out here watching this beautiful watching this beautiful finals. Axe ball, and it gonna be gone. It's gone. This is the wicket, and see the celebration from Mir Faizan. I was telling you this is going to be a good contest between the two young rising stars, and finally the contest has been won by Mir Faizan. A very good catch by Sohail Khan at the deep third man. Mohsin departs for 14 of 7, and Pulwama finding the number 7. और मोहसिन को जाना पड़ेगा. यंग वर्सेस यंग का जो मुकाबला था, इस मुकाबले को जीता है फैजान ने. पेस के साथ गेंद की थी और अच्छा कैच वहां पे थर्ड मैन पे पकड़ा गया और इनिंग्स का हुआ खात्मा. मोहसिन 14 रन बना के जा रहे हैं. 140 7 विकेट के नुकसान पे. रिप्ले में आप देख सकते हैं, ये देखिए पेस के साथ गेंद आई थी और अच्छा कैच वहां पे पकड़ा थर्ड मैन पे और इनिंग्स का हुआ खात्मा. और फैजान आप देखिए, इकोनॉमी देखिए और पेस के साथ जो गेंदबाजी हो रही है, ये जो एफर्ट लगा रहे हैं यंग खिलाड़ी, मुझे लगता है इसको सैल्यूट मिलना चाहिए. Absolutely, for a moment, if you can see the Mohsin just shuffled across, just exposing his stumps, trying to come with some more power behind that stroke, but eventually happens to have the man at the deep third man. Is gone, 7 gone. It's 140 for 7 after 15.3 ML Gymkhana. और यहाँ पे मौका है, अब टेल शुरू हो जाएगी क्योंकि आखिरी रिकॉग्नाइजिंग पेयर थी. अब टेल यहाँ से शुरू होगी. मुझे लगता है फ्रेंड सलाम पुलवामा के गेंदबाज के पास मौका है टेल को खत्म करने का और यहाँ से पारी 150-60 के आसपास से हटाने का. Well, they will have to really contain that rhythm, you know. If they just cannot get all the wickets pretty quickly, still keep those runs under control. Never let these batsmen, still Sohail Paul over there, not let them to go for some more runs, but Sohail Paul of a caliber batsman, we should never underestimate him. He can be brutal, he can be lethal, especially is so great, so dominant if we talk about those last overs. अब आया है रूफ खेलने के लिए. वहां पे अवसर बन सकता था, चांस था वहां पे, लेकिन गेंद थोड़ी सी आगे गिरी. फील्डर वहां पे मौजूद थे लेकिन गेंद थोड़ी सी आगे गिरी और रन मुकम्मल किया और सोहेल पॉल को स्ट्राइक पे लाया है रूफ मीर ने. Rohit Mir is also a very handy all-rounder for MLA Gymkhana Budgam. And I was telling you, MLA Gymkhana Budgam is such a solid side, very balanced. And they have still 26 balls. Their first duty will be to just try and play out the full 20 overs. And they will surely come try for maximum of the runs. This one is up in there. Mera lefty under the catch. Will it be? Oh my goodness! Sohail Paul is once again dropped. And Mera lefty could not balance his position. The ball was very high up in there. Mera lefty had to cover a huge distance. He did. And eventually he was not having control, not having position, not coming underneath properly. And Saklan, Sohail Paul is having a fortune with him today. 2 catches up and dropped. अब यहाँ से मीर फैजान करे तो करे क्या. आप कैच देखिए, देखिए 2 खिलाड़ी गए थे, कॉलिंग थी वहां पे मैदान की, लेकिन नहीं कैच पकड़ पाए. और क्या गेंदबाजी हो रही है. क्रेडिट देना चाहूंगा फैजान को. सेट बल्लेबाज को आप परेशान कर रहे हैं अभी गेंदबाजी से. And this is gem. Mir Faizan is indeed a gem. Oh, edged straight to the deep third man. I must give credit to Mir Faizan. Is such a young bowler and just giving difficulties and challenges. And if you see that drop catch, maybe that fielder at the deep fine leg could have been a better situation, could have been a better option. And there was no proper calling between the two, no proper communication. अगर काशिफ भी वहां जा सकते थे और कैच को पकड़ सकते थे, लेकिन मेहरान खुद गए. कॉलिंग सही नहीं थी और अगर यहां पे सोहेल पॉल का कैच पकड़ते, रन्स का फ्लो काफी कम हो जाता क्योंकि सेट बल्लेबाज अभी क्रीज पे खड़े हुए हैं. And Sohail Paul will just try to take maximum out of those 2 drop catches. Had his catch been taken, and MLA Gymkhana would have been in a spot of bother. He's the man who can take them to a big score. He has scored this class, and he has got the shots as well. 38 of 25, and Sohail Khan recalled into the 3rd over of his quota. 2 overs so far with an economy of 8.5. He has gone for 17 and is wicketless. Catches absolutely win matches, but today Sohail Paul
He's having luck with him and he's having a good day in office. आज किस्मत भी सोहेल पॉल का साथ दे रहे हैं, लेकिन कब तक देगी, यहाँ से देखने वाली बात होगी। और वन शॉट करा दी गई वहां पे। अगर आप दूसरी गेंद ऐसे करेंगे तो नो बॉल करा दी जाएगी। अब शॉर्ट गेंद तो आने वाली है नहीं। अब यहाँ से रोगमीर अभी स्ट्राइक पे होंगे। आप देखिए रिप्ले में देख सकते हैं, शॉर्ट गेंद अच्छी गेंद की थी सोहेल खान ने, और सोहेल खान ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। Indeed, every single bowler has bowled well, and Shirazwani was the man. And he has surely bowled well. He has led his team from the front. That is what captain can do. You, and especially, let's talk about Shirazwani. The way he is standing at that short covers, and with every single ball, he is trying to have a word with his bowler. I believe that is some great skills that a captain should go for. और बिल्कुल, और अभी तक गेंदबाजी की बात करें तो 3 गेंदें ऑन द डॉट, और इस स्टेज पे डेथ में सोहेल खान ने 3 गेंदें डॉट करवाई है, और रोगमीर को चाहिए स्ट्राइक पे लाए अपने पार्टनर को। Absolutely. X-ball chance, just short of that backward point deep region. This was travelling and it just timed it towards his unnatural left side. Eventually could not reach, and the ball travels over the fence for 4 runs. रिप्ले में आप देख सकते हैं गेंद तेजी से ट्रैवल कर रही थी। मुझे लगता है अगर कैच आप नहीं पकड़ सकते, कोशिश होनी चाहिए थी गेंद को रोकने की। He just dived, he just had a full length dive, and it was the pace that caught better of the man. Ropemeer now chipping into the boundary. Once again a good ball, and a good comeback from Sohail Khan. Just 4 of the 5 balls so far. The run rate has come down 9, now it's 8.73. And Sohail Paul's catches, I believe those 2 drop catches might be going through the minds of Pulwama 11. अगर वो 2 कैचेस पकड़ते, मुझे लगता है 100 के आसपास ही स्कोर, 110 के आसपास ही स्कोर होता, क्योंकि दबाव आता फिर एमएलए जिमखाना की टीम पे। इस बार क्या शॉट खेला है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। Can't track that ball short, especially on that off stump channel very close to the man. You made the mistake of bowling in that line, and it's gone for 4. That's end of over. 8 runs of the over, 17 done. It's 1-5-1 for 7 MLA Gymkhana. Yet to screens. He is such a very great player. Wicket-keeper, left-handed batsman. Once again, he has got a role today. Man of the match in the semi-finals. And he has to come stronger. And he has to come with some runs. Faizan in his last over. That is up in there. And has been pumped away. Oh, extra cover region. And a glorious shot from Sohail Paul, my boy. This is what drop catches can do to you, and it's proving expensive now. और अभी तो इनको गेम फुटबॉल की तरह नजर आ रही होगी, क्योंकि 26 गेंदें खेल चुके हैं सोहेल पॉल, और 44 पे पहुंचे, 6 रन दूर है नेशनल सेंचुरी से। और आज किस्मत ने भी इनका साथ दिया। 2 कैच जो ड्रॉप हुए थे, मुझे लगता है उनके दिमाग में चल रहा होगा फ्रेंड्स पुलवामा के गेंदबाजों के। सकलैन once again, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट ही जाता है। अब फैजान का रियल टेस्ट होगा यहाँ से, क्योंकि पहली गेंद पे छक्का पड़ा है। क्या उसी लाइन के साथ गेंदबाजी करेंगे, या यहाँ से कुछ बैक ऑफ द हैंड स्लोअर का इस्तेमाल करेंगे, या डेक और हार्ड यहाँ से एक अच्छी गेंद डालने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट गेंद से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। And so far, no slower ones. Just talk about the slower ones. No slower ones from Mir Faizan. It just needs to come up with the variation. Next ball again! And it has gone a beauty, and it has gone a mile. This time to the onside. Back-to-back sixes from Sohail Paul, and has gone to his 50 as well. और पहले एक छक्का, उसके बाद दूसरा छक्का, ये देखिए। और फैजान को लाइन चेंज करनी होगी, और इसी के साथ निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। सोहेल पॉल जब परेशानी में थी टीम, तब सोहेल पॉल ने परेशानी से निकाला है अपनी टीम को। And they are just trying to cruise to that big score. It's 163 for 7. And Sohail Paul, you beauty man. What a hitting. He's such a powerful, such a clean striker of the ball. And Mir Faizan boy,
You've got to contest. You've got to change your length. You've got to change your line, and you've got to change your mind as well. अगर बैक ऑफ द हैंड स्लोअर यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, कटर का इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है क्लैब में फंसा सकते हैं सोहेल पॉल को. Well, he needs to surely come with some best he possesses. In he goes. Shot. That's going to be called as a wide. Way over the head of Sohail Paul. And Mir Faizan is down as well. He just trying to come up with some more efforts. Means he's still believing in the pace. He's still believing in the pace. और गिर गए थे वहां पे. अभी मुझे लगता है दबाव महसूस कर रहे हैं इस ओवर में, तो दबाव महसूस कर रहे हैं Captain. क्योंकि आड़े हाथों लिया है सोहेल पॉल ने इनको इस ओवर में. And Captain Shirazwani need to come closer to this man and have a word with him. He is such a young blood. He is having such big platform waiting for him, but he needs to be given some kinds of an advice. Oh, that's a typical type of a helicopter shot from the man Sohail Paul. Just in the slot, pitching it over, foolish of a delivery, and it just goes bang! 3 back-to-back sixes. My goodness, this is turning out to be a very expensive over from Mir Faizan. और ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ा है, डिस्पैच किया है इस गेंद को, और लैंड कहां पे वो स्टैंड्स में, और फिर वेट कर रहे थे इस लेंथ का, पहले वेट कर रहे थे और उसी इनके पाले में गेंद आई और डिस्पैच किया पॉल ने. पॉल इज ऑन फायर. He is absolutely spewing fire. 6, 6, right 6. My goodness, at one stage the economy of Mir Faizan was strong, and now it's gone. 33 of 1 of 3.3, and Sohail Paul might be eyeing for 6 sixes. कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि 6 छक्के लगाए पाए. और क्या चल रहा है फैजान के दिमाग में, क्या चल रहा है फैजान के दिमाग में. मुझे लगता है आपने जो कहा था कि शिराजवानी को आना चाहिए और समझाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई भी गया नहीं है फैजान के पास कि आपको कैसी गेंद करनी है. Ball again! My goodness, that has been given a flick shot straight to the square leg region. Another 6. 4 sixes off the hour, my boy. I was telling you Sohail Paul might be targeting those 6 sixes in an hour, and he's trying to go for the same, and is almost half the way done. 4 sixes of 4 balls, plus the wide as well. 25 of 4. And Sohail Paul, you beauty man, can we have a record over here? It's 6 sixes, a record in making. ये गेंदबाजी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और खिलवाड़ कर रहे हैं सोहेल पॉल. और आज फैजान का जो ये ओवर रहा है, इसमें जो पिटाई रही है, जो इंटेंस दिखाया है सोहेल पॉल ने, मुझे लगता है अगर आपके पास हथियार हो, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, वही अब जो आप मिशरन्स की बात कर रहे थे, कटर्स की बात कर रहे थे, वो लैग कर रहे हैं अभी फैजान. That's still going with the pace. He's not having any variation, no captain's word, no any player just getting closer to the man. He's a young blood. Once again, this is gonna go! This is another 6! 6 number 5, my man! This is Sohail Paul's power for you! It's almost 6 sixes now. 1 ball, and can we have a record over here, my boy? 31 of 5. This is brutal. This is dominance. This is sheer class from man Sohail Paul. Wow! That is surely, and look at the face of Mir Faizan. He can't believe it. He can't believe it, and this is unbelievable batting from Sohail Paul. Wow! और फैजान ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे पिटाई भी होगी. मुझे लगता है जो एकेडमी में काम होता है इन पे, वहां से मुझे लगता है कोच को जरूर समझाना चाहिए कि कटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पॉल को पता है पेस के साथ गेंद आएगी. और पोजीशन में आप देख सकते हैं, रिप्ले में भी देख सकते हैं, देखिए ये देखिए गेंद बिल्कुल वैसी गेंदबाजी हो रही है. पोजीशन में पहले आ रहे हैं और एक लंबा छक्का जड़ दिया. 5 गेंद में 5 छक्के. क्या यहाँ पे आज रिकॉर्ड दर्ज करेंगे सोहेल पॉल? Well, got the man over there. Higher authorities of police, I believe DSP South already. And out here in the game, we have got 5 sixes. Can we have number 6? Here goes Faizan. Oh my goodness! This is 6 sixes in an hour. The record has been created by Sohail Paul out in this Gunning Memorial Cricket Stadium, Rajorikalu. My goodness, he's being hugged. He's being surely given a standing ovation for everyone over here. You can't get better than these scenes. This is cricket out here in J&K Qualifiers League by Aaron News. You are a gem man. Wow! और सोहेल पॉल ये कर क्या रहे हैं? सोहेल पॉल आड़े हाथों लिया है फैजान को और 6 गेंदों में 6 छक्के.
फैजान ने कभी सोचा नहीं होगा नाइटमेयर, और नाइटमेयर कहूंगा मैं। I believe that is going to be surely a nightmare for Mir Fazan. He will not going to go with the confidence. Oh, that is a match-winning knock. And you find very less often out here in Kashmir cricket. A bowler being hit for 6 sixes and a wide 37. And we would love to have the replay. Oh, what is that? He is fire. He is absolutely hitting fire. This is number 6, I believe. और गेंद अभी इनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, जो छक्के मार रहे हैं। और अभी काशिफ को गेंदबाजी करने के लिए बुलाए गए, वो भी 19वां ओवर। I believe I just am stunned by those 6 sixes from the man Sohail Ball. Wow. This time, this is another. Ropeer comes into the party now. Cow and kick the new ball from downtown. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? खिलवाड़ गेंदबाजी के साथ हो रहा है, और खिलवाड़ कर रहे हैं रोपमेर और सोहेल पॉल। Saklang, is it live match or just having highlights of the game? और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाईलाइट्स चल रही है, क्योंकि जो स्कोर दर्ज किया स्कोर बोर्ड पे, और जो रोपमेर और सोहेल पॉल जो खेल रहे हैं, मुझे लगता है जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। And I must say that, you know, the way Mir Fazan has been hit for those 6 sixes, it's just a young kid. I believe he's an 11th standard student, but he needs to have his head high. He was bowling great, and he needs to have some more confidence, and his teammates need to play a role, because this is such a situation for the man. He may go down seriously. He needs to take his head high. बहुत कुछ सीखना होगा, और जरूर इनके दिमाग में होगा कि मैंने कहा गलती की। ओह माय गॉड! That has gone out of the ground. That has gone out of the ground. That is a biggie. That is a biggie, and it's out of here. Now Roopmeer going for 6 sixes in an over. 2 sixes up over number 19, and Kashyap is also looked to be hit for 6. Will we see on other side again? Oh, just missing it, but he will have a boundary. It's going all over the fence for 4 runs. I believe there was some pad inside in that stroke. And what's going on out there in Gunny Memorial? I believe it's not a live game, it's highlights going on. हाईलाइट्स चल रही है यहाँ पे, और ये जो खेल रहे हैं अभी सोहेल पॉल, और पार्टनरशिप देखिए 18 गेंदों में 64 and 64 of 18. Saklan 8 sixes of 8 balls plus a boundary. And my goodness, that ball almost gone to the fence, but Mir Fazan got a good job. Saklan in a 2020 format, 8 sixes in 8 balls. You can't get it more often. और बिल्कुल जो इंटेंट दिखाओ, जो रन रेट अभी है वो 11 की अब हो गए, 205, 7 विकेट। What's going on? Number 9 that has gone on to the wrap-up gates residential house, my boy. Sohail Paul comes up with another 6. Look at that. That is that was screen. Wooden plank has been broken with that power of Sohail Paul. What's going on? I believe the window pane has been broken. और पहले टूटा गया था शीशा, और फिर तब तजमिल बाबा थे, और आज सोहेल पॉल ने काम किया है। I believe once again cricket, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट ही जाता है. This is cricket, my boy. Shisha toot gaya once again. Those women folk out there, they can't believe, even though they don't know they're on the screens, but window pane has been broken. This is finals of J&K Qualifiers League, my boy. Don't go anywhere. 10 sixes. We got 9 sixes in those last 10 balls. That is a brutal hitting from the man, especially Sohail Paul. What's he doing? 80 of 32. He is surely having a song and is letting his bang singing songs badly today. और स्कोर देखिए 211 पे पहुंचा है। क्या एक और छक्का, आखिरी गेंद पे होगा। That has gone out of the ground. Out of the ground, my boy. He was just toying with the ball as he is going hammering in tongues. Which direction now remains left, where the 6 has not been hit by these 2 men, especially Sohail Paul. He is just toying with every single bowler. At one stage, Prince 11 Pulwama looking great, and now
They look completely out of the game. और बिल्कुल अब जो स्कोर दर्ज किया है 217, अब मुझे लगता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ी है फाइनल्स पे। और ये क्या हो रहा है, गेंद पे गेंद नहीं मंगवानी पड़ रही है, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, और यहाँ पे पिटाई हो रही है गेंदबाजों की, और पिटाई कर रहे हैं धुरंधर शेर। Yes, Glenn, we have got an announcement over here. 10 balls have been lost, and I believe we are having shortage of the balls, boy. गेंद मंगवानी पड़ेगी, मुझे लगता है ज्यादा गेंदें ग्राउंड पे रखनी पड़ेगी। And I believe Air News have to really play a big role today. Get a ball box, get one more ball box, because Sohail Paul and Rob Mir are doing the damage. And Budgam will be so pleased with the way things are going for the man. At one stage, Prince 11 Pulwama were going so dominated. And this is T20 cricket. 1 minute down, next minute up. और अगर की मूड में नजर आ रहे हैं सोहेल पाल रूप में, सोहेल पॉल के पास मौका है यहाँ पे शतक लगाने का, और कम गेंदों में इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि 86 रन पे खेले, 33 गेंदों का सामना किया है, और क्या धुलाई है, क्या पिटाई हुई है, लाजवाब बेमिसाल, जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है जोड़ी की। Those two catches that were dropped of Sohail Paul, and those might be making marks on the minds of Prince 11 Pulwama fielders. So the had those catches been taken, the situation could have been completely different for both the teams. और मेरा लेफ्टी अभी खुश होंगे खुद को कि जो मैंने कैच ड्रॉप किया था वो भी प्रेशर महसूस करेंगे बल्लेबाजी में। Sohail Khan, last over of the game. This one, driven power play. There is a protection at the deep mid order, just a single. Captain Tajummul Baba on the toss did mention 170-180 would be a good comparable score. And look at the score, it's 218. Prince 11 Pulwama, they can't believe, and the body language, if we can see, they are just completely out of the senses. I believe this one up in the air, straight to that deep wideish mid wicket region for a single. Hamila Gymkhana, what have you done, boys? What have you done, my boys? 10 sixes in a matter of 12 balls. That was brutal, that was lethal, that was dominance, and that was really fire. Good ball, just turning out to be a dot one. And I believe Prince 11 Pulwama just having a roll, just come down and hit from the ball one. और बिल्कुल आप भूल जाइए कितना बड़ा स्कोर आपके गेंदबाजी कैसे रही, अगर वो दिमाग में रहेगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बल्लेबाजी में। आप भूल जाइए और बल्लेबाजी करने के लिए गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। That has gone out of the ground once again, and this is Rob Mir. Sixes, it's raining sixes, and it's showering sixes. My goodness, never ever in my entire commentary career I have seen this kind of a demolition. Courtesy Rob Mir and Sohail Paul. It has gone again. Can you believe it? This is like a football that has been kicked out of the game. This one over deep and on, another 6 back to back by Rob Mir is going on to Pori up 15. Can he get to that half century? We have to wait for the same. 2 balls left and he requires 10 runs. और क्या धुलाई हो रही है यहाँ पे गेंदबाजों की, और रोब मीर और सोहेल पाल की जो पार्टनरशिप लगी है कमाल की लगी है। 231 7 विकेट के नुकसान पे किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा लक्ष्य आज देखने को मिले। Oh! Chip shot, that's a flick one once again. It has got over the line. It has got over the square region. It's going to put 6 runs. 3 sixes on 3 balls. And can you guess? Sohail Khan is being taken on a song now. And this is all. 20 overs have been completed, and look at the score. It's a massive, it's a mammoth, it's a towering score. 237 and 238 will be the target for Prince 11 Pulwama. Sohail Paul 87 not out of 34, and Rob Mir 46 of 16. What a game, what a dominance, what a batting display. And Sohail Paul, those catches, you are lucky. 238 will be the target for Prince 11 Pulwama. This is absolute dominance. This is absolutely dominance, Glenn. Till 16 overs, Prince 11 Pulwama were in the game. But that one over from Mir Faizan and Sohail Paul just going after him.
that completely changed the real complexion and real scenario of the game. बिल्कुल सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हुआ है क्योंकि 190 180 के आसपास स्कोर नजर आ रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 237 का पहाड़ जैसा लक्ष्य अबूर करना होगा, और वो भी फाइनल्स में 200 प्लस का जब भी लक्ष्य होता है वो जो रुका रेट का दबाव आपके जहन में जरूर रहता है, प्लस पॉइंट तो हमेशा आपके पास होता है. And talking about that last man that fell in 140, and I believe there was a partnership of around 97 runs between these two, and that is a real carnage. That is a real carnage. And Budgam and the people, public from district Budgam, Central Kashmir will be having a jolly. अब मुझे लगता है अगर ऑफिस को छोड़ के, स्कूल्स को छोड़ के अभी इस मुकाबले को देखने के लिए आ रही है बडगाम की जो, अगर इनकी बात करें, इनके फैंस आ रहे हैं देखने के लिए इस मुकाबले को. 238 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, और फ्रेंड्स पुलवामा क्या जीतेगी इस मुकाबले को या नहीं ये आपको सेकंड इनिंग्स में पता चलेगा. लेकिन जो ब्रूटल हिटिंग हुई है, आज तक मैंने कभी ऐसी ब्रूटल हिटिंग नहीं देखी है. जो ब्रूटल हिटिंग की है रूपमीर और सोहेल पॉल ने, वो कमाल की रही है. And that record 6 sixes in an over by Sohail Paul, I believe that surely got to the better if we talk about MLA Gymkhana Budgam. And Mir Faizan, a young man, young kid, 11th class student, is surely star in making. But remember that very incident when Stuart Broad was bowling. He was looking very young. Yuvraj Singh got 6 sixes, and he said in his statement that 6 sixes actually made me come stronger, and that's why I do have those kinds of situations. और बिल्कुल जो 6 छक्के लगाए थे उसके बाद भी उन्होंने क्रिकेट खेली है. वो चाहते तो वो वहाँ पे क्रिकेट को छोड़ भी सकते थे, काफी ज्यादा उनको दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसके बाद वो खेलते गए. और जो अभी आप देख सकते हैं टेस्ट में काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, और रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है. Absolutely, this is surely challenging atmosphere for the man, and Mir Faizan will just take it. He will just accept the challenge. He's a very, very strong young man, and he will come back stronger. And this is the commentary box, the visuals coming to you all. I'm your host, English commentator Baba Nisar, alongside Mr. Saklan Mushtaq, my fellow commentator. 238 is the score for Prince 11 Pulwama. It's a massive, a mammoth, a towering score on the board. Let's see, we get a great contest. आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी है नहीं. यहाँ से जो स्ट्रेटजी दिखानी होगी, आप भूल जाइए आपने गेंदबाजी कैसी की है. अगर आप बल्लेबाजी अच्छे से करेंगे, वो इंटर दिखाएंगे, तो आप जीत भी सकते हैं. यहाँ से कोई हिम्मत हारनी नहीं होगी कि जैसे पहली इनिंग्स में खेला गया मैंने जिम, आप भी खेल सकते हैं वैसे, आप भी वो इंटर दिखा सकते हैं, लेकिन कोई इंटर दिखाएगा कौन, यहाँ से ये देखने वाली बात होगी. And that's all what we have from the first innings. We'll be shortly back after the break. Till then, you enjoy your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very massive start, and Javed Malik just showing his all intention is great. 4-6. That is a good start. Slips in place. The Jamal Baba, a second slips, no third man, a gully, a point, a cover, a mid-off. On the onside, we have got a wideish mid-wicket, a deep mid-wicket, and a short fine leg in the form of Manzoor King. Good ball, just deflecting it. It was a slower one, and Javed Malik just plays it down to the short fine leg for a single. And now for the first time, it's going to be Mera Lefty on the crease. The hero of that semi-final for Pulwama. 86 runs he played, and today's acclaim, once again he needs to come stronger. आज एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी क्योंकि आज जरूरत है, और आज ज्यादा दौड़ गेंद आप नहीं खेलेंगे. स्ट्राइक रेट अच्छी रखनी होगी, और वो इंटर दिखाना होगा मेरा लेफ्टी और जावेद मलिक को. And I believe Mera Lefty should play a kind of a role wherein he believes in ones and twos, and let he give the platform to the likes of Javed Malik, who's such a good striker of the ball. So far is doing good. Was ball, Devon power play. What a glorious shot that is. And to the middle of the ball, just runs to the fence for 4 runs. क्या शानदार शॉट था. अच्छी फॉर्म में है मेरा लेफ्टी, और कमाल का शॉट. स्ट्रेट बैक टू गोली की मारा, गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन के लिए.
और 15 बगैर किसी नुकसान के। He just pitches the ball over. It was slightly over pitch. And all he need to do just presenting the full face of the blade and down to the deep mid off of 4. Lefty also getting off the mark with that boundary. He's such a class player, such an elegant. Down the track he goes. Oh, not getting it there. I believe first over done and a very good start, 15 of the over. स्टार्ट काफी अच्छा मिला है अभी फ्रेंड्स पुलवामा को। इसी स्टार्ट की जरूरत थी उनको। अभी कोशिश करेंगे कि इसी मोमेंटम को आगे कैरी करें, क्योंकि रुका रेट पहले से ही पहली गेंद से 12 के आसपास है, उसको यहाँ से काबू में रखना होगा। और 15 रन पहले ओवर में बना चुकी है फ्रेंड्स पुलवामा की टीम। It's a good start to Friends 11 Pulwama, targeting, rather chasing 238. That is going to be a massive target, but in the T20 cricket, you can't predict it pretty early. And if you reach the finals, it means that you are surely a very good side in Friends 11 Pulwama. The way they have played cricket in this entire tournament so far, they have been great. And they have defeated some big teams as well. And today, they have a good score, a massive one. And a mammoth score to be chased. They've got a good start of the very first over, 15 of the over. And now let's see who is going to bowl from that far end. It's going to be Junaid. So I believe fast bowlers introduced from both the sides. 15 for none. Javed Malik 11 of 4, a 6 and a boundary. Pat Cornish 10 sixes of 10 balls from MLA Gymkhana in their first innings. Courtesy Sohail Paul and Rove Mir. And go Junaid, who is another good all-rounder. Today he got, oh, big mix-up. It's a no ball. Mera lefty having no good coordination with Javed Malik. He was almost half the way down. And eventually umpire Javed Shah just comes up with a signal of a no ball. Straight away a gift to Javed Malik, and he loves to get, he would love to take and accept this gift. बिल्कुल तोहफा मिला है उनको। अब यहाँ से क्या छक्के के साथ इस तोहफे को कबूल करेंगे या नहीं? जी नहीं लगा पाए बड़ा शॉट जावेद मलिक। Intelligence from the bowler. He just cut the pace off, bowled a slower one, knowing that Javed Malik is just loving to go after a ball. And if a ball is slower one, definitely the batsman gets to see it on the same. No advantage of the free hit. Once again Junaid down the track. That's a good ball, a bit quicker. Javed Malik could not get it onto the sweet part of the blade. Hits him onto the top. And a dot ball. And I believe there is no more opportunity for you to just go and play more dot balls, because every dot ball will make the run rate creep up. बिल्कुल डॉट गेंद आप नहीं खेलेंगे अभी, क्योंकि अगर आप यहाँ से डॉट गेंद खेलेंगे जो रुका रेट वो 13 के आसपास हो जाएगी, फिर आपके लिए मुश्किल होगा। कोशिश होनी चाहिए वो इंटेंट दिखाए और अच्छा स्टार्ट दे अपनी टीम को। And outside edge, straight to the keeper, and this is supposed to be good for Friends 11 Pulwama. No problems and no mistakes for the wicket keeper, and Junaid was brought as a change in the team. He has provided the breakthrough, and Pulwama struggling first. Wicket gone at 16 for 1. कोशिश थी कि बड़े शॉट खेला जाए वहां पे जावेद मलिक से, लेकिन किनारा छूट हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर से कोई गलती हुई नहीं और परेशानी में नजर आ रही है। आप रिप्ले में देख सकते हैं जुनैद ने सफलता दिलाई। ये देखिए कोशिश हुई थी और बॉर्डर से दूर खेलने की कोशिश, और अच्छा कैच वहां पे पकड़ा विकेट कीपर ने। Yes, in your replay you just watch it, just away from the line. Oh, that was a big edge and a very good catch from the wicket keeper. That's not the start Pulwama would have wanted to go for, but Javed Malik gone and out walks to the centre Mr. Yunus Butt, who's also a good hitter off the ball, a good cricketer, a strong man, and today his team definitely would love to get the strength from this man. बिल्कुल आज जरूरत है आपकी, और आज आपको एक अच्छी यहाँ से पारी खेलनी होगी, क्योंकि जरूरत है आपकी टीम को। 222 अभी भी जीतने के लिए चाहिए। अभी 16 रन सी बोर्ड पे है। पहले ओवर में 15 आए थे और इस ओवर में 1 रन, और वो भी 3 गेंदों में दिए। यहाँ से अगर हम जुनैद की गेंदबाजी की बात करें, अच्छी गेंदबाजी हो रही है जुनैद की। Absolutely, he's bowling at good length. So far only one no ball has been bowled in this. No run from the blade. Good shot, that one, but finds the point fielder. And they just need to believe in timing as well. Talking about MLA Gymkhana, a very, very
pleased side at the moment. They will be just putting up that massive score on the board and getting the wicket very quickly on the top of the second over. I believe Prince 11 Pulwama have surely got some tough challenges to accept. आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होने वाला है फ्रेंड्स पुलवामा के लिए। शॉर्ट गेंद से टच करने की कोशिश और अंपायर का इशारा था वाइड का। तो 17 एक विकेट के नुकसान पे अभी जुनैद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन में नजर आ रहा है और वही से यूनुस को चाहिए कि मेहरान स्ट्राइक को रोटेट भी किया जाए और जो खराब गेंद मिलेगी उसको सही नशे दिया जाए। He just tried to test him with the short ball, just caught it over the head and it just signaled as a wide. 17 for 1. Once again he goes in. Oh, slower ball. And he was just leaning forward, not getting to the pitch of the ball. It's a dot one. And if you are chasing this score of 238, you need a fiery start. You need a massive start and you need a big start. और स्टार्ट आपको अच्छा मिलना चाहिए, अभी तक मिला नहीं। पहले ओवर में वो जो इंटेंशन दिखाए थे वो काफी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद जो विकेट गिरी उसके बाद दबाव आया, यूनुस भी अब कुछ नहीं कर पा रहे। आखिरी गेंद और खेला का और उसकी तरफ कोई भी रन नहीं मिला। इस गेंद पे 2 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। 17 एक विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स पुलवामा की टीम। The rope meet is going to continue. He was taken for some runs in his very first over, 15 of them. And let's see what will be the approach of Mera Lefty, who's looking in good form. He got a man of the match in that semi-final they played, defeating Patan Pirates Cricket Club. Some changes being made in the field, and knowing that is so strong on that offside, especially behind the square. A gully in place, it slips in place, a backward point. Tajamul Baba at the points himself, the captain. Next ball just plays it down to the point, and Mera Lefty will fetch a single. And Siklan, these singles are not going to hurt. It's not going to bother MLA Gymkhana. सिंगल से फायदा आपको मिलेगा नहीं, और वही से एमएलए जिमखाना भी की कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा बड़े शॉट्स जब लगेंगे तब ये परेशानी के बायस बन सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल्स ले रहे हैं तो सिंगल से ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि रुका रेट अब धीरे धीरे क्लाइम होती हुई नजर आ रही है 13 की तरफ। And with every dot ball, or if you just score a single on the ball, the run rate will definitely creep up. It will grow up, it will increase, and it will be getting very difficult to then tackle. That's why you just have to go big guns right from the start. Try and get more runs in the power play. Ah, that's a good shot. It's gone all the way. Yes, this is 6 from Yunus. That's short, ample time. In the back foot he goes, on the back foot rather. And he just thumps it over mid-wicket for 6 runs. और बैकफुट पे शॉट खेला और बॉडी लाइन से बाहर पहुंचाया इस गेंद को। कमाल का शॉट यूनुस ने वो इंटेंशन दिखाए। अब इसी इंटेंशंस को आगे दिखाना है, मोमेंटम को कैरी करना होगा। और 24 एक विकेट के नुकसान पे 214 अभी भी जीतने के लिए चाहिए। And that is the momentum, that's the intention, and this is the stroke they need quite often. One more good thing I would like to mention over here, this is left and right in combination. And maybe, just talk about MLA Gymkhana, they may be feeling a bit relaxed, knowing that we have got more than 200 runs on the board. And let's talk about that intention here. It might come good and handy for the Prince 11 Pulwama, because at times you take it pretty easy having such runs on the board, and Prince 11 Pulwama may just go exploit the situation. बिल्कुल, फ्रेंड्स पुलवामा ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आपका दिन नहीं हो, जब आप कैच ड्रॉप करते हैं तो फिर ऐसा आपके साथ जरूर होता है, और वो आज हुआ है फ्रेंड्स पुलवामा के साथ। Once again Roopmeer, oh, that was a bit slower, and it kept low as well, and goes down to the short gully, not for the runs. There is Jia Ali at her screens. Jia Ali, another genuine fast bowler, and who has been not given the ball so far. We will definitely see him pretty in the action as well. Outside the off stump, too close to cut.
It's a dot ball. Run rate at the moment just 9. It's 24 for 1. Prince 11 Pulwama. They will have to surely bring out the best out of the team. बिल्कुल आज वैसा खेलना होगा, वो इंटेंट दिखाना होगा, लेकिन आज वो इंटेंट की कमी नजर आ रही है। पहली मन बनाया है कि ये नामुमकिन है इस मुकाबले को जीतना, लेकिन अगर वो इंटेंट दिखाएंगे तो नामुमकिन है नहीं T20 फॉर्मेट में। 13 की रुपया रेट भी चेज हो सकती है, लेकिन अभी जो इंटेंट दिखाया, मुझे लगता है इंटेंट लैग कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स पुलवामा के बल्लेबाज। Mera lefty now on the strike. 8 runs of the over with the ball to go. And I believe Mera lefty's wicket will be very, very important for both the sides, because he is in good form. And just look at behind the square, around 4 fielders on that point and gully between those, and this region is surely being cordoned off. 3 ओवर तामपजीर हो चुके हैं। 26 1 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स पुलवामा। This is Pountain. This is Pountain, and these are some beautiful views at our screens from Srinagar City. Lovely. These are lovely scenes. So fascinating, so glorious, and these are beautiful. Sakleen, you just want to spend some time under these beautiful moments? बिल्कुल, मैच जब खत्म हो जाएगा उसके बाद कोशिश करेंगे कुछ मोमेंट्स वहां पे बिताने की। This is up in there. I believe it's going to be caught. Oh, this is easy pickings for Sohail Paul, and Mera lefty departs. The moment ball came off from the blade, Mera lefty got his head down, and it is going off the ground with his head down. And Prince 11 Pulwama definitely struggling a big way. Informed batsman departs. He departs for 6 or 4. It's 26 for 2 now. 26 2 विकेट के नुकसान पे जुनैद को, जिसके लिए आज बुलाया गया था, बल्ले से कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज गेंदबाजी से वो कारनामा सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरा लफ्टी पिछले मैच के हीरो रहे थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे, आज कुछ कर नहीं पाए। 6 रन बना के जा रहे हैं पेविलियन की ओर। अब नए बल्लेबाज आदिल 50 आया है खेलने के लिए। अब आदिल 50 क्या कुछ यहाँ से करेंगे, क्योंकि जो रुका रेट है वो 13 की हो गई है। I believe it's a good move. Just bringing and sending Adil 50 up the order. Most of the times you will find him coming, lower the order, middle order. But today, keeping in mind such kind of caliber he possesses of hitting those balls big, that's why he has been given that 2-down position. And let's hope he just comes up strong as far as Prince 11 Pulwama concerned. But the moment it looks quite difficult for them. It's 26 for 2. They are just having not some good moments. Grand finals of J&K Qualifiers League, Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. And this is ANN News channel that's bringing you all the live telecast. Where your commentators, myself Baba Nisar, English commentator, and my colleague Urdu commentator Mr. Sakleen Mushtaq from Pulwama. Here at Junaid, 2 wickets to him so far. Oh, chip again, straight to the cover. It's gone. Nisar Thakur making no mistake, and Adil 50 here. I can see Adil 50. He's just hitting his head. He is just hitting his head. And he goes out on a golden duck, and it's 26 for 3 now. और सॉफ्ट डिसमिसल कहूंगा मैं आदिल 50 के लिए। और जा रहे हैं पेविलियन की ओर। मुझे लगता है अब यहाँ से तो जीतना थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है। जुनैद अब हैट्रिक में है, क्या हैट्रिक हासिल करेंगे? क्योंकि आज तो मैंने देखा जब 6 गेंद पे 6 छक्के लगे। We have already gone a record today. 6 is off in over, and now we are having a hat-trick time. And Junaid 2 wickets on his 2 balls, and the change brought in the team, and it's working for MLA Gymkhana. और क्या गेंदबाजी रही है, अभी तक 3 विकेट ले चुके हैं, 2 रन का जरिए है। दूसरा ओवर अपने
देखा कर रहे हैं और 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे और हैट्रिक पे रहेंगे जुनैद। अब कौन आए हैं खेलने के लिए? लीजिए शिराज वानी आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ से जो सिचुएशन है वो काफी डिफरेंट होने वाली है आपके लिए। Shiraz Wani finds himself on now and they will be going through some very tough situations. You know, one more maybe he has to just go to have that hat-trick ball in mind. Next thing is knowing that we have to go over 13 almost to just go with the tackling of the run rate required. And talking about Adil 50, I believe not a good series for the man, not good with the ball and not good with the bat as well. बिल्कुल। और अगर हम यहाँ से बात करें रिप्लेस के लिए, देखिए यहाँ पे सीधे वहाँ पे कोई गलती हुई नहीं फील्डर से, उनके हाथ में कैच थमा दिया और ये अंपायर है हमारे। Mr. Sono has done a very fabulous job throughout the tournament. He is such a great experienced umpire. And there you see the dugouts, some spectators as well. And Shiraz Wani, let's see, we see the best from the man. बिल्कुल। अब शिराज वानी यहाँ से क्या इंटेंट दिखाएंगे? बहुत कुछ चल रहा होगा अभी इनको दिमाग में, क्या उस रन्स को जो रन्स है क्या उसको कम किया जाए या चेस के लिए जाए, या अगर मेरी विकेट चली गई तो फिर पीछे कौन खेलने के लिए आएगा? बहुत कुछ इनके दिमाग में भी चल रहा होगा। And in between we find a stunned silence in the ground. Spectator is silent. And the dugout of Friends 11 Pulwama completely silent. And look at the slips cordon. ऐसा लग रहा है कि टेस्ट हो रहा है। And 3 fielders have been placed in the slips. Sohail Paul, Tajamal Baba, Manzoor King now brought a bit very closer. And that is a very strange position for Shiraz Wani. It's a hat-trick ball. Oh, down the leg stump. That might be called as a wide. It is. The hat-trick will be still on. Junaid, that's why it's a good move by the captain Tajamal Baba, knowing that it's a hat-trick ball, and he has brought very close in fielders. और दबाव में रखने की कोशिश हो रही है वहाँ पे शिराज वानी की, क्योंकि शिराज वानी के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। 12.66 की रन रेट अब हो गई है। Forward shot lug also into the position. Pulls the ball beautifully. One bounce over the ropes. It goes for 4 runs. And Sakleen, Shiraz Wani will have to be very careful. Has already gone through this fashion. He has gone out in a manner of hit wicket. And today almost after hitting that hook, he got close to hitting the stumps. बिल्कुल, इससे पहले भी ऐसे आउट हुए हैं और आज बिल्कुल बाल बचे वहाँ पे, क्योंकि इनका पिछला पैर जो था वो काफी क्लोज था विकेट्स के, तो ऐसे बचना होगा आपको। पूरा शॉर्ट गेंद से टेस्ट करने की कोशिश थी। नो, and that was a no ball as well, a free hit. This one has been hit and is gonna fall in no man's land, and still it is not having enough pace to go over the line. 2 more runs to Wani. Wani is very experienced cricketer from Pulwama. He is the captain of the side as well, and his stay on the crease will be pretty crucial. Let's hope we come across the best from this man, and we want a contest on as well. बिल्कुल 34 3 विकेट के नुकसान पे, और अगर 200 प्लस का लक्ष्य नहीं होता तो मुझे लगता है इतना स्ट्रगल नहीं करती। और कलायु का शानदार इस्तेमाल किया, फाइनल बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद को पहुंचाया शिराज वानी ने। Rest into the play. If you bowl him onto the pads, he is surely gonna go for the runs against you. Another boundary from Shiraz Wani. He goes on to 10 of 3, and quickly the score goes on to 38 for 3. We need a game on. Crowd need a game on. Viewers need a game on. And we believe this should not be a one-sided encounter. But at the moment, 3 wickets at the top gone for Pulwama. Some spot and some bothering. But who knows? T20 cricket, just no time, and you find other side of the coin. That's one. That has gone beautifully. Oh! The catch has been dropped to 6. What a catch, and eventually he just touches that ground line. He just touches that boundary line, and eventually we are caught with another 6 from this man. Shiraz Wani, you beauty man. He's the man who is holding those all nerves, and he can take his team to some kind of a situation where definitely Prince 11 Pulwama might fancy the chances of getting over the line. This was Mohsin Manzoor coming point with the catch, and eventually touches that line. And it's a 6 claim. Some contest going on.
और शिराज वानी को पारी खेलनी होगी, एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास। क्या वैसी पारी खेलेंगे? इस बार बल्ले का और बोनी लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद को पहुंचाया। That was a cutter. That was a slower ball, and Shirazwani is so experienced, so legendary. He just lets the ball come closer and just gives it a very gliding touch, and finds a deep third man C. That is a very, very great shot, impact shot from Shirazwani, and it goes for 4. और रुका रेट आप 12 से नीचे हो गई है। जो इंटेंट दिखाया है शिराजवानी ने वो कमाल का है, और 5 गेंदों में 20 पे पहुंचे। इसी स्ट्राइक रेट के साथ आपको यहां से खेलना होगा। 48 for 3. The run rate at one moment it was creeping over 13, and with the arrival of Shirazwani, things now looking great for Prince 11 Pulwama. Just look at his batting display. 20 of 5 balls. He has hit a 6. He has hit 3 boundaries as well. And I believe this is bringing some momentum back. If we talk about Prince 11 Pulwama, this over proving to be very expensive. Around 22 runs. And this is massive over, and that's why we find Captain Tajammul Baba finding himself to come back for the ball now. तजम्मुल बाबा आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। कैप्टन खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। क्या यहाँ से विकेट दिलाएंगे? और वैसे इंटेंट क्या रहेगा अब यूनुस का और शिराजवानी का इंटेंट क्या रहेगा? मुझे लगता है इंटेंट वही रहना चाहिए कि हमें रन के लिए जाना है। Well, they have to go make sure after every ball. That's the only way. They can't put the ball to go for the dot runs. Just go for the ones. Because if you take the game deep with a run rate required of more than 15 and 16, that's going to be very difficult for them to just tackle them down. That's why they will have to play their natural aggression and believe in those 12 runs every over. और शिराजवानी अब स्ट्राइक पे रहेंगे। 5 में 20 बना चुके हैं। यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छी पारी खेलनी होगी और स्ट्राइक रेट 300 के ऊपर रखना होगा। Absolutely. His strike rate at the moment is just 400 exactly. And as the captain leading from the front, he was good with the ball, and so far he's good with the bat. This time cuts it beautifully, but finds that slips man rather gully. It's Manzoor King. I believe he is a bit hurt. He's just going through some severe pain, extreme pain. Eventually it was a dot ball. 49 विकेट के नुकसान पे रुकर रेड अभी भारा की है। कोशिश होनी चाहिए इन 2 ओवर्स को टारगेट करेगी। 2-3 ओवर्स को आपको टारगेट करना है। जो मूवमेंट है वो वापस आप पे आएगा। I believe big six is loading, and this is pull shot, and almost he just caught to the stumps, and a good stop from Mohsin Manzoor over there. With every ball he just plays being deep in the crease, there are chances of getting Shirazwani out of hitting the stumps. बिल्कुल, अगर आप शॉर्ट गेंद से इनको टेस्ट करेंगे, इनका जो पिछला पांव है वो स्टंप्स के क्लोज काफी आ रहा है। इससे पहले भी एक बार आउट हुए थे ऐसे। That's Yunus now, exactly 50 on the board for 3. That is a good strategy. Just playing in ones and bringing Shirazwani back on the ball, back on the crease. And it's a no ball. It's a no ball. And Shirazwani is having a gift. We got a no ball as well previously, and eventually on that ball there was no more runs, and Shirazwani now knows he can hit the ball bang. Here goes Tajammul Baba. That has gone all the way. That has gone on the roof of this pavilion structure. It's a biggie. It's a 6 Pramwani. This is what I was telling you. 6 is loading, and it comes out from the blade of the captain Shirazwani. और इसी पारी की जरूरत थी। 27 पे पहुंचे, 8 गेंदों का सामना किया है। 58 3 विकेट के नुकसान पे। जब तक शिराजवानी है तब तक उम्मीदें रखनी चाहिए। And absolutely, J&K Qualifiers League by Anna News, and Anna News is putting all efforts in. The very second edition is going to be started in the very coming days. It's a good platform for the young guns, especially the cricketers from all over the valley. Get yourself ready for the participation in that second edition. It's going to be Anna News once again giving you the live telecast, giving you the real coverage, and driven beautifully. What a glorious cover drive. Once again, it's a no ball. And we are having everything on the game. No balls, boundaries, sixes, and Shirazwani is having a song. और मैंने पहले भी कहा था 2-3 ओवर्स को आपको टारगेट करना होगा और जो मोमेंटम वहां पे आएगा। और एक और नो बॉल, एक और तोहफा। क्या इस बार 6 is loading? Well, he knows that I have nothing to lose and I have everything to gain. Having a kind of a play is having liberty.
Tajamal Baba taken for 15 off his first ball. In goes Baba into Vani. Oh, down the track. It was a bit quicker. And that low bounce, I believe, got better of the Vani. Eventually, no more runs. No contact. It's a dot ball. Another addition, Saklan, comes very quickly after this gets done today. I believe in a week's time, the second edition from ANN News channel is going to be started. It's a good news for the young cricketers of the valley. बहुत सारे क्रिकेटर्स खेलना चाहते हैं इस लीग में और अपील जोरदार हुई है और उंगली उठ गई और रिव्यू ले लिया है शिराज वानी ने. And Sono took a long time to raise his finger up, and quickly Shirazwani has got with his review. Two reviews today from both the sides. Shirazwani, he was hit on his pads, and he was a bit of a slower ball as well. And quickly he goes upstairs for that review. और ये आप रिप्ले में देख सकते हैं, अपील जोरदार अपील हुई थी. Oh, It looks to me very close. It looks to me very close that Jamal Baba just dropped the pace off that ball. And TV umpire Tariq Saab is having a job in the technical room. He will try to just check it out from different angles. And Saklan, if Shirazwani gets LBW, and I believe it's all over for Friends 11 Pulwama. बिल्कुल फिर काम तमाम हो जाएगा यहाँ से. अगर हम बात करें फ्रेंड्स में पुलवामा के लिए, वही से अच्छी खबर रहेगी एमएलए जिमखाना के लिए, क्योंकि इंटर दिखाया था शिराज वानी ने. डिसीजन इज पेंडिंग. It's a big decision. It's a big decision. And TV umpire Tariq Saab just watching it closely. Let's see what will be the decision. Third umpire's decision is pending. Shirazwani was looking great. He has hit some glorious boundaries and sixes. Sono just gives him the out, LBW, but quickly Shirazwani got for that review. Both the teams have got two reviews. Let's see what will be the decision from the TV umpire. Struggling more now. They are struggling a big way. Shirazwani was looking great. It was a very good ball, a slower one, and he just got to save it by the seam. Sixes, 4 fours and 2 sixes. He played with a strike rate of 281. This is a serious situation. 63 for 4. And most of the time captain was looking great. He was going good. And eventually he just missed the line completely and was found in front of the stumps plump. MLA Gymkhana just getting better and going great over the game. Who now comes down the track, and he is going to accompany the man Yunus Butt. .63 for 4. Saklan, where do you see Friends 11 Pulwama now? आप बहुत परेशानी में नजर आ रही है फ्रेंड्स 11 पुलवामा. अब मुझे लगता है जीतना नामुमकिन सा हो गया, लेकिन जो played a very good cameo of 31 of just 11, and eventually he just fell
victim to Tajamul Baba's beauty slower. And let's see now, as middle order gets exposed pretty quickly, they will have to show some serious talent. विकेट ज्यादा गवाई है फ्रेंड्स सलाम पुलवामा ने. Absolutely, if you look for the first innings, they were 7 down, which is around 140 on the board, and drops him on the pad. And umpire Javed are not interested for the same. And since then, there was a complete change. 10-6. Just over mid off. And Saftar has been given a boundary. That is typical shot. Poimiru just not having such height. He was on the edge of the circle, still could not jump perfectly. That's a boundary. 63 4 विकेट के नुकसान पे दूसरी गेंद पे चौका. अब सफदर कैसे कम बैक करेंगे. और this one plays it beautifully. That's a good shot. Just going deep in the crease and just deflecting it over square region for 4. Back-to-back boundaries by Yunus and score goes to 71. That's the momentum they have to carry, and they have to take this momentum on. कैरी करना होगा. इस बार खेला है टॉप कॉर्नर की तरफ और 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाजों ने. बहुत बहुत शुक्रिया. 9 रन अभी तक इस ओवर में आए हैं 4 गेंदों पे 72 4 विकेट के नुकसान पे. अभी भी 166 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. Absolutely. Yeah, that's why it's going to be a dead ball. Second required run rate, that's below 12, and the run rate that they are going, that's over 12, but only that column of wickets, 4 of them that are gone. That's a bit of a concern, I believe, for Prince 11 Pulwama. विकेट ज्यादा गवाई और डायरेक्ट हिट अगर होता तो काम. फ्रेंड्स पुलवामा वही से एमएलए जिमखाना की टीम चाहेगी और विकेट से और दबाव में लाए फ्रेंड्स पुलवामा की टीम को. Yunus is looking great, and he should go big and long. Saftar completes his over. 10 of this one. Power play completes. Pulwama. That Dal Lake, and eventually I just happened to go for that ride as well. That was a real lovely moment. अब आपको मौका मिलेगा क्योंकि जब ये मुकाबला खत्म हो जाएगा फिर आप राइड मार सकते हैं वहाँ पे. फिर अच्छा मौका होगा आपके लिए. Maybe any news team is thinking for a plan after the final gets completed. We may go for a trip as well. बिल्कुल जरूर ये हो सकता है, ये मुमकिन है क्योंकि बिजी शेड्यूल था. अब बड़ी मुझे लगता है एक 7 डेज या मे बी 10 डेज की ब्रेक होगी तो प्लान होगा. If I ask you which place you would like to go to trip for? I think Shikara and Polo View. Okay. Tajamul Baba once again. He's going to bowl continue a wicket to him, and 15 of the over. Just travels it beautifully. और सिंगल से परेशानी होगी नहीं यहाँ से एमएलए जिमखाना के लिए. परेशानी तभी होगी जब बड़े शॉट्स यहाँ से रहेंगे और कोशिश होनी चाहिए विकेट्स लेते रहे. जितना आप विकेट्स लेते रहेंगे उतना आपकी टीम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और आएगी. अभी भी रुका रेट की बात करें तो 12 के आसपास ही है और करंट रेट 12. अच्छी गेंद पड़ने के बाद और अंदर आती हुई कुछ भी समझ नहीं है बल्लेबाज को कौन सा शॉट ऑफर करना है. पैर नहीं चले उसके. अभी भी यूनुस 18 पे खेल रहे हैं और तो पहली गेंद पे 1 और दूसरी गेंद डॉट. तजमुल बाबा 16 रन अभी तक दे चुके हैं. 1.2 की गेंदबाजी अभी तक कर चुके हैं और अब बराबर 12 की रुका रेट हो गई यहाँ से. बड़े शॉट्स और इस बार कलायु का शानदार इस्तेमाल किया. फ्लिक शॉट खेला गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए. ये इंडियन आपको दिखाना होगा. खराब गेंदबाजी कर रहे हैं तजमुल बाबा. पैर लाइन पे ज्यादा गेंदबाजी कर रहे हैं
और सही नसीब दी उसने 22 पे पहुंचे, 16 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। 160 अभी भी जीतने के लिए चाहिए इस मुकाबले को। 11.85 की रुकावट रेट है। रिप्ले में आप देख सकते हैं पैरों पे गेंद की थी और सही नसीब दी बल्लेबाज यूनुस ने। इस बार ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं गए, लेकिन क्या चौका हासिल हो गया, छक्का। जी हां, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। एक और चौका, चौके पे चौका, पहले एक चौका उसके बाद एक और चौका। 82 4 विकेट के नुकसान पे यूनुस 26-17 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है और 9 रन अभी तक 4 गेंद में आए हैं। अब फिनिश ऐसे करना चाहेंगे तजीमुल बाबा और वही से कोशिश होनी चाहिए यूनुस की कि और बड़े शॉट्स लगा पाए यहाँ से। 82 4 विकेट के नुकसान पे तो 56 रन अभी भी जीतने के लिए चाहिए। तजीमुल बाबा चले एक और गेंद के साथ, इस बार खेला तो उसकी तरफ कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पे। एक गेंद का अभी भी आना बाकी है। 82 4 विकेट के नुकसान पे और करंट रेट 12 के आसपास है। रुका रेट उससे कम है 11.85 की। कोशिश होनी चाहिए यहाँ से, दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि विकेट्स लेते रहे और दबाव में रहे फ्रंट से पुलवामा को। और इस बार गेंद के लाइन को पहले पिका, क्या मिशन मिला जी नहीं, और कैच वहां पे पकड़ लिया है। बोमी लॉन्ग ऑफ पे मौजूद थे, सीधे उनके हाथ में कैच थमा दिया यूनुस ने और जाना पड़ेगा पेविलियन की ओर। 7 ओवर इतना पर 0 हो चुके हैं। 82 5 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स पुलवामा की टीम। Yunus, the last man, goes off, and I believe Faisal is the new man who walks out to the centre, and Seclain half the team back to the pavilion, and just having 82 runs after the completion of 7. I believe it's very challenging for Prince 11 Pulwama now. बिल्कुल, आप काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है यहाँ से। पहली गेंद पे सिंगल लेने की कोशिश और मुकम्मल भी करेंगे एक रन। सिंगल से परेशानी होगी नहीं यहाँ पे। एमएमएलए जिमखाना बडगाम की बात करें, अब जो रुका रेट है वो 12 के ऊपर हो गई है और पहली बार जो करंट रेट है वो 12 के नीचे हो गए। 11.58 की अब करंट रन रेट है, लेकिन जो विकेट्स का कॉलम है वो परेशानी का बाइस बना हुआ है फ्रेंड्स 11 पुलवामा के लिए। 83 5 विकेट के नुकसान पे Friends 11 Pulwama, this ball just deflected it down to the mid-wicket region, and these runs are not going to hurt the likes of mighty MLA Gymkhana. Only the way I believe it's going to go for 4s and 6s that can do for the job for Prince 11 Pulwama. Next ball just turns it down to the deep fine leg, and easy pickings for Abid Mir, a double. 86. Even though the run rate, still I believe that's quite good. It's handy, it's strong, it's healthy. But those half the team, 5 wickets of them, especially the wicket of the captain Shirazwani, who was looking great. और ये शायद इंजरी आई है वहाँ पे फील्डर। अब मेडिकल टीम वहाँ पे जाएगी और उनका जायजा लिया जाएगा। क्रैम्प्स आ रहा है शायद। I believe, is it Jia Ali or Sohail Paul? And first aid, I believe there might be some sprayed on that right knee. Just going through pains.
He is just going through pain, extreme and severe pain there. He is just giving some physio. And Sakline, that's great moment, having medical assistance, and there he is being supported, and that will just relieve him of the pain. बिल्कुल राहत महसूस करेंगे वहाँ पे, और मेडिकल टीम हमारी गई है, जायज़ा ले रही है वहाँ पे, और उम्मीद करेंगे कि वहाँ पे ठीक होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अभी पेन महसूस कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, अभी Think to go off the ground if he feels so. He may just have a word with his captain, but I believe he's okay. And this physio always doing a great job. And News just providing their services to the teams, to the players out here, that you will not, most of the time you will not find it in the Kashmir cricket. बिल्कुल, और सेकंड एडिशन भी का भी इनेकाद किया जा रहा है, तो आप उसमें एंट्रीज ले सकते हैं, और इससे भी अच्छा टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा। और इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, जारी सारी और आज इख्तिताम पज़ीर पहुंचेगा। आज इसका ग्रैंड फिनाले खेला जाना तय है, जो भी जारी सारी है, और उसमें लगभग ऐसा लग रहा है कि MLA जिमखाना की टीम चैंपियन बनेगी, लेकिन कुछ नहीं कह सकते जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए। 86 for 5, 4 of the 3 balls. Safdar again, and just waiting for the ball and cutting it down to that point region for a single. And singles not gonna hurt the likes of the mighty MLA Gymkhana. Here goes Safdar Ali bowling with that left arm. Nisar Thakur, and just stopping the ball, which is just right hand. I believe he was just in a bit of a slumber. He was sleeping, and quickly the ball just got to him. Next ball, just proper defense, Faisal, and this is going to end the over. 8 done with a run rate of almost 11. It's 87 for 5. Gibson Hello. Nisar Thakur now being handed over the ball, and just I believe Sakline, it's just a bowling practice. बिल्कुल, अब मुझे लगता है हिम्मत हारी है यहाँ से। अगर हम फ्रेंड्स ने अब मुझे नहीं लगता है कि जीत के लिए जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। Down the leg stump, and it's running away down to the long leg region. It goes for 4 runs, and these will be the whites. 5 whites this will be. There was no bat involved, and they will be very ready to hand these runs. Hello. ये दरअसल एक अनाउंसमेंट है, अगर किसी की पार्किंग में कोई बाइक या गाड़ी है तो बराए मेहरबानी वो बाइक या गाड़ी वहाँ पे हटा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट्स आ रहे हैं और गेस्ट्स की गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क हो रही है। प्लीज़ किसी भी स्पेक्टेटर की पार्किंग स्लॉट में कोई बाइक या गाड़ी होगी, उन्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो अपनी बाइक्स को गाड़ियाँ जो है वो प्लीज़ वहाँ से हटाएं, क्योंकि गेस्ट्स आ रहे हैं तो ये पार्किंग स्लॉट उनके लिए रखा गया है। प्लीज़। Nisar Thakur once again just deflecting the ball, and it goes down to the mid-wicket region for a single. And Sakline, singles are not gonna hurt. बिल्कुल, यहाँ से सिंगल से कुछ काम होने वाला है नहीं। And once again, I am just loving these shikaras. Bowden! He just exposes the stumps, and the ball has knocked him over. He's cleaned him. He's cleaned him up. And Faisal was not looking in control. Nisar Thakur just watched his ball. Oh! Had capped low and got better of Faisal. 6 gone. It's 95 on the board.
और परेशानी बढ़ती हुई फ्रेंड्स सलाम पुलवामा के लिए, और परेशानी में नजर आ रही है टीम, क्योंकि यहाँ से आज परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है बल्ले से। और पहले जो दबाव इनका था 200 प्लस का जो दबाव था, जो अंत के 3 ओवर्स में 86 के आसपास रन बने हैं, मुझे लगता है वहां से इन्होंने मैच हारा है। MLA Gymkhana just getting better after every over, and they're just making sure they're just getting wickets as well. And 6 of them, the top order has surely gone. It's collapsed. And the way I tell you, MLA Gymkhana bowlers, they are just bowling at the right wheels and the right lengths as well. बाबा साहब, जिस तरीके से आज शुरुआत की MLA जिमखाना ने और जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग को फिनिश किया, काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे अभी फ्रेंड्स पुलवामा स्ट्रगल कर रही है, उन्होंने भी अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, काफ़ी अच्छे फन का मुजाहरा कर रहे हैं, अभी हिम्मत नहीं हारी है। Well, Mudassir Saab, I would love to mention the very important thing over here. Cricket has been sometimes very cruel for you, and at times it just comes at a great leveler. And if we talk about the first innings, Prince 11 Plavama were going great till 17 overs. They were in the game strong, and then there was a carnage from Sohail Paul and Rohit Mir. 6 sixes of the over of Mir Faizan. Then 4 sixes in that over by Rohit Mir, and there MLA Gymkhana came back stronger in the game. और वही से पूरा मोमेंटम चेंज हुआ, जब हमने वो देखा तो वहाँ से पूरा मोमेंटम चेंज हुआ। सब चले सब बॉलिंग के साथ इस बार खेला है स्ट्रेट बैक का बॉलर, पीछे खिलाड़ी आ रहे, क्या रोक पाएंगे? अच्छी फील्डिंग एक हाथ से गेंद को लिया वहाँ पे, और एक और रन का इजाफा होता हुआ फ्रेंड्स सलाम पुलवामा की जिनकी बात करें 97, 6 विकेट के नुकसान पे 9.1 ओवर की गेंदबाजी में तक हुए। क्या वो इंडेड दिखाएंगे अब यहाँ से आबिद या नहीं? जी नहीं, यहाँ से अब हार्ड गेंदें ज़्यादा खेल रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो जो स्कोर अभी 141 रन करना है वो 100 के कम अगर हार मिलेगी यहाँ से तो वो लेना चाहेंगे। और इस बार इंटेंट दिखाने की कोशिश हुई थी, वहाँ पे गेंद और बल्ले का मिलने हुआ, डॉट गेंद और अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 97, 6 विकेट के नुकसान पे 9.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है। एक और रन मिलेगा इस बार। 98, 6 विकेट के नुकसान पे 9.4 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है। 2 गेंदों का अभी भी आना बाकी है 10वें ओवर की। 98, 6 विकेट के नुकसान पे काशिफ 2, आबिद 9 पे खेल रहे हैं। अब वो इंटेंट की कमी नजर आ रही है। इस बार अलॉन्ग द कारपेट खेला, पीछे लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, अब सिंगल से आगे बढ़ा रहे स्कोर को। अब मुझे नहीं लगता जीत की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो जो इंटेंट की कमी नजर आ रही है, क्योंकि रुका रेट अब 13.5 के आसपास हो गई है। 139 रन अभी भी जीतने के लिए चाहिए। 10.1 ओवर की गेंदबाजी का अभी भी आना बाकी है। चले एक और गेंद के साथ इस बार खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं और 1 रन मुकम्मल करेंगे और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 106 विकेट के नुकसान पे। तो 10 ओवर में 138 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए फ्रेंड्स सलाम पुलवामा को। और विकेट सेव करके रहा, विकेट्स 4 सेव है, अभी 4 विकेट सेव करके रखे हैं फ्रेंड्स सलाम पुलवामा ने। मुझे लगता है ऐसे नामुमकिन है इस मुकाबले को जीतना, लेकिन क्या अभी इंटेंट दिखाएंगे या मन में बना रखा है कि अब हम यहाँ से जीत के लिए नहीं जाएंगे? वो जो रन्स की जो गैप है उसको कम करने की कोशिश शायद अब हो रही है फ्रेंड्स सलाम पुलवामा के बल्लेबाजों की जानिब से। इस बार खेला है कॉर्नर की तरफ, गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर, 4 रन के लिए कोशिश हुई थी वहां पे गेंद को रोकने के लिए, पर्टिकुलर काफी ज्यादा वहां पे गेंद प्योर गेंद सर के ऊपर से चली गई। वहां पे फील्डर मौजूद थे, आप रिप्ले में देख सकते हैं। अभी ने जो इंटेंशन दिखाए थे ये देखिए, वहां पे फील्डर आए थे लेकिन काफी ऊपर से चली गई और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 104, 6 विकेट के नुकसान पे 134 अभी भी जीतने के लिए चाहिए इस मुकाबले को। और इस बार खेला शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पे। जितना डॉट गेंद आप खेलेंगे उतना रुका रोड में इजाफा होता जाएगा और वही नजर आ रहा है। यहाँ से 13.86 की रुका रेट अब यहाँ से हो गई है। इस बार बल्ले का मुंह खोला, गली की तरफ गेंद को खेला है फील्डर की जानिब और 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया है। अब रुका रेट 14 की हो गई है। 133
अभी भी जीतने के लिए चाहिए। 9.3 ओवर की गेंदबाजी का अभी भी आना बाकी है। छोटी गेंद खेला कवर की तरफ, कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पे। आज क्या मुकाबला किया है एमएलए जिमखाना बडगाम ने, और यहां से आज ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। एक और गेंद अपील हुई और उंगली उठ गई। क्या रिव्यू लेंगे वहां पे? एक और रिव्यू इनके पास है, लेकिन रिव्यू नहीं लेंगे और जा रहे हैं पवेलियन की ओर। एक और झटका लगता हुआ फ्रेंड्स पुलवामा को, 7वां झटका काशिफ को जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर। 105 7 विकेट के नुकसान पे अब ये एक तरफा सा मुकाबला हो गया है। अब 3 विकेट्स आपको लेने और यहाँ से आप ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। अब नए बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि सुहेल खान आएंगे खेलने के लिए। 105 7 विकेट के नुकसान पे 10.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है। आप रिप्ले में देख सकते हैं, तीनों विकेट्स के सामने पाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया। 105 7 विकेट के नुकसान पे और वन साइडेड ये मुकाबला रहा है अभी तक। पहले जो इंटेंट शिराज वानी ने दिखाया था, उसके बाद फीकी सी लगी है बल्लेबाजी। अगर हम बात करें यहाँ से फ्रेंड्स पुलवामा की, 105 7 विकेट के नुकसान पे तो हमारे गेस्ट्स भी आए हुए हैं और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। काफी सारे इनाम आज रखे गए हैं, तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आप हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। पीबीएस लांबा GOC 31 सबेरिया यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, जो कि आज मेहमान हैं इस मौके पे। और थैंक यू सो मच हमारे महफिल में 4 चांद लगाने के लिए। तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे साथ जुड़ेगा जरूर। बहुत सारे मेहमान आप स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे आपके, यहाँ पे आए हुए हैं। GOC 31 सब एरिया, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। तो अभी 3 विकेट्स आपको लेने और यहाँ से आप ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। शिकारा राइड की अगर हम बात करें तो विजुअल्स आपको घर बैठ के आप एंजॉय कर रहे हैं ए न्यूज़ पे इन विजुअल्स ये देखिए। सिग्नल से परेशानी होगी नहीं यहाँ पे। एमएलए जिमखाना की टीम को परेशानी तभी जब बड़े शॉट्स लगेंगे। अब मुझे लगता है यहाँ से जीतना नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि रुका रेड अब 15 की हो गई है। अब ये वन साइडेड सा कंटेस्ट है बिल्कुल। इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ और 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। कोशिश कर रहे हैं वो जो गैप है 130, इसको अगर 80-70 के आसपास ले जाए वो इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आज वो ग्रैंड फिनाले फीका सा लगा आज हमें, वैसे परफॉर्म किया नहीं फ्रेंड्स पुलाव की टीम ने। इस बार इंटेंशन दिखाए थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आई गेंद, फिर भी गई कॉर्नर की जानिब। पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं और 1 रन दौड़ के मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज। 109 7 विकेट के नुकसान पे 129 अभी भी जीतने के लिए चाहिए। फ्लाइटेड गेंद बैट को साथ में मिला के खेला, बैक टू द बॉलर, कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पे। 109 7 विकेट के नुकसान पे 11.4 ओवर की गेंदबाजी। कदमों का इस्तेमाल किया, 4 हो गए वहां पे और क्या ड्रॉप हुआ वहां पे और दौड़ के 1 रन मुकम्मल किया। तजमुल बाबा थे वहां पे जिनसे क्या ड्रॉप हुआ। ये आप देख सकते हैं जो कैच वहां पर ड्रॉप हुआ था तजमुल बाबा से। And I believe there is a stumping chance. Out goes the finger. And it's very sloppy cricket from Sohail Khan. And he just has a review left that he can go upstairs. Sohail Khan, you have got a review. You have got a review, but he is, I believe, out of the mind at the moment. And now he comes back and takes the review. In between Saklan, let's mention another edition by ANN News Channel. That's to be kick-started in the very coming time. I believe in a week's time that's going to be started. So I believe the young cricketers of the valley should get ready
and try and come and participate in that kind of tournament. And editor-in-chief, Mr. Tariq Ahmed Butt, ANN News Channel, chief promoter, chief organizer, he has done a very revolutionary work. बिल्कुल काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया था जब इस टूर्नामेंट का इनाकात किया गया था और खुश असलूबी के साथ आज इख्तिताम पजीर पहुंचना। पर इस ये देखिए आप रिप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपील ज़ोरदार हुई थी और अभी टीवी अंपायर से मदद ली जाएगी तारिक साहब से, उसके बाद हम अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे। That's a very close call, maybe on different angles. There might be, I believe he's out of that crease, out of that line. And I believe he might be given stumped. But what a platform. That is a great initiative. Great initiative by ANN News Channel and first of its kind. Unique, historical. The first of its kind. There you get the live telecast on television. And you are being given coverage on different platforms and courtesy at ANN News Channel. और बिल्कुल और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एट ए टाइम लाइव कराना आसान काम था नहीं, बट ये पॉसिबल तभी हुआ है जब ANN न्यूज़ ने प्रयास किए, वो कोशिशें की और कोशिशें आज रंग लाई है। आप जो भी देख रहे हैं ये जो टूर्नामेंट जारी और सारी था और जो रूल्स की अगर हम बात करें फाइन्स भी लगे और काफ़ी अच्छे से डिसीजंस लिए गए, तो मुझे लगता है जो सेकंड एडिशन होने वाला है वो इससे भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। Absolutely, and here you go. I believe Diara system will be a very better system in that very edition. It has come to our notice that we may get Hawkeye, we may get Tracker, we may get Cynicometer as well, and then there will be no problems and no complaints as all as far as the doubts are concerned, and credit must be given to ANN News Channel, the editor-in-chief, Mr. Tariq Ahmed Butt, and in between we've got a decision. He's out, he's stumped, and the batsman goes out for Prince 11 Pulwama. It's just a matter of these two wickets and MLA Gymkhana, the champions of J&K Qualifiers League. और पहले एडिशन का आज ताज सजेगा, वो सजेगा सर पे तजमुल बाबा के। तजमुल बाबा ने जिस तरीके से अपनी टीम को लीड किया है वो काफ़ी शानदार था और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ हो तजमुल बाबा, आज ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। और जो व्यूवरशिप की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे भी है, अगर हम ANN न्यूज़ की बात करें जियो टीवी पे पहले नंबर पे है, उसका क्रेडिट मुझे लगता है तारिक साहब को मिलना चाहिए। Absolutely, you know, if and definitely we should give credit to the whole management, to the whole staff, the real efforts that have been put by the technical staff. Each and everyone just played the role beautifully, and that's why we see ANN News just going great all over the valley. और बिल्कुल जो रिस्पांस मिला है उसी रिस्पांस के कारण जो पहले स्पोर्ट्स चैनल लाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है काफ़ी इनिशिएटिव है उनकी जानिब से, तारिक साहब की जानिब से जो एक इनिशिएटिव लिया गया है स्पोर्ट्स चैनल का, पहली स्पोर्ट्स It's gonna be turned out as, and there you see editor-in-chief Mr. Tariq Ahmed Butt Saab is also the chief organizer. I believe he is out there with Mr. PBS Lamba Saab, GOC 31 sub-area, and this is the man, he's the man behind the success of this all J&K Qualifiers League, and surely that is a very successful initiative. बिल्कुल काफ़ी सक्सेसफुल इनिशिएटिव था इनकी जान से, क्यों रिव्यू सिस्टम्स की बात करें, एंगल्स की बात करें, ये कहीं पे पॉसिबल था ही नहीं, ये पॉसिबल करवाया है ANN न्यूज़ ने। और जब सेकंड एडिशन स्टार्ट होगा उसमें और टीमें आएगी, क्योंकि अभी तक रिस्पांस की बात करें, रिस्पांस काफ़ी शानदार मिला है अभी तक इस टूर्नामेंट के अगर हम हवाले की बात करें। Yeah, you got it pretty right. You know, we have got positive responses from all over the valley. You know, we just talked to different cricket personalities, and we just had some live shows as well, and from every angle there was some great responses. And thinking of to launch the first top hit support channel out here in Kashmir, I believe it's being welcomed and from everywhere. बिल्कुल, और जब भी हमने इसके बारे में बात की थी तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, जो भी हमें दोस्त मिले वो कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये विजुअल्स आपको ANN न्यूज़ पे नजर आ रहे हैं। And these two personalities, Mr. Shok Sob and Chai Chai Cricket, they're always on.
Expol, proper defense, back along the track, not for the runs, I believe. 13 overs done. It's 1-1-5 for 8. And Tajamal Baba now. And once again, Shikara right. What a view. Tajamal Baba just now having some words with the umpire. Can't understand for what reasons they are just having the words with the umpires. And Tajamal Baba, who has bowled 2 overs, rather 3 overs, beg your pardon, 20 runs as he has got 2 wickets. और कोशिश करेंगे अब जो 2 विकेट्स बचे जल्दी से लेने की और यहाँ से ट्रॉफी लिफ्ट करने की और जल्दी से विकेट जीत के जो मजा चखेंगे। मुझे लगता है कोशिश वही है, इसलिए खुद आया गेंदबाजी करने के लिए। I believe Tajamal Baba is having some words with the umpire Sonu. Maybe that's regarding the batsman, and umpire just sorting it out. Can't understand what Sonu is going to do. Tajamal Baba, the captain of MLA Gymkhana. And it was screens. We're having the replay of the wickets. This is the first one. That was caught beautifully at the deep mid-off. We were having the replay of the wickets. At was screens now. Nisar Thakur, who got better of Faisal. He was knocked over. Beautiful ball, kept low. And he just got not able to play the one. That was the next one. Wraps him on the pad. Plump LBW in front of the stumps, especially when the batsman is being hit on the back leg. Expol chips in it, just short of that slipsman.